We are studying Fourier series और इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। तो ये वीडियो में हमें एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, सो इट इज़ नॉट अ न्यू फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, इट इज़ फॉर mathematical analysis. It is a one way of analyzing the Fourier series. Fine. So first of all, I will write Fourier series equation of trigonometric form. So trigonometric form जो है, so it is trigonometric Fourier series. Okay, it is x of t is equal to a0. ये डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है गिवन पीरियोडिक फंक्शन में. इट इज n is equal to 1 to infinity. It is not 0 to infinity. If you write 0 here, it will be wrong because when we put n equal to 0, we'll get a0. Okay, and other components are 0. So it is an cos of n omega t plus bn sin of n omega t. Okay, so I will explain in a simple language how to obtain the exponential Fourier series और उसका frequency spectrum. Okay, so Fourier series converts time domain periodic signal from time domain to frequency domain, or we can say Fourier series convert a time domain periodic signal to frequency domain. Okay, it's a representation of a signal in terms of frequency domain. Okay, I mean, how it is a frequency domain? When we obtain the frequency spectrum from this equation, then we can say it is a frequency domain, but here it is a time domain. Okay, so अभी इस इक्वेशन में we have some equations. a0 is equal to, it is 1 by t, 0 to t, t is a fundamental time period है, x of t और ये dt, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन an is equal to, this is 2 over t integration over the given period x of t और cos n omega t or with respect to t dt. Okay, and bn, what is bn? It is 2 over t 0 to t x of t और यहाँ पर है sin n omega t और ये dt. ये हमारे पास a0, an और bn के इक्वेशंस है. ओके, सो अभी करना क्या है? वी हैव टू यूज वन आइडेंटिटी. विच वन? बाय यूजिंग टेलर्स फार्मूला वी कैन राइट लाइक दिस: cos theta is equal to e raised to j theta plus e raised to minus j theta divided by 2, and sin theta is equal to e raised to j theta minus e raised to minus j theta divided by 2j. What is j? J indicates the complex term. Okay, this is the complex exponential representation of trigonometric form. ये फार्मूले का यूज करके, ओके, वी डोंट हैव थीटा, वी हैव n ओमेगा t. तो विल राइट अकॉर्डिंग टू आवर रिप्रेजेंटेशन इज, हमारा जो साइन कॉस n ओमेगा t है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कॉस n ओमेगा t है. सो n ओमेगा t के प्लेस में हमें क्या पुट करना है? e रेस टू प्लस j n ओमेगा t प्लस e रेस टू माइनस j n ओमेगा t एंड 2. सिंपली इट इज 2 हियर. और cos n ओमेगा, साइन n ओमेगा t के प्लेस में हमें क्या करना है? साइन n ओमेगा t is equal to e raised to plus j n omega t minus e raised to minus j n omega t divided by 2j. Okay, this is according to
दिस फार्मूला। ओके, अभी j को हमें अगर ऊपर लेना है, वी कैन राइट दिस एज, फॉर एग्जाम्पल इट इज 1 डिवाइड बाय 1 इज गिवन, और 1 को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो वी कैन राइट दिस 1 डिवाइड बाय 1 लाइक दिस। ओके, सो अभी देखिए दिस वन, यहाँ पर j 1 बाय j इक्वल टू माइनस j, डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, सो वी कैन राइट लाइक दिस। सो इस j को हम ऊपर मूव करेंगे, सो इट विल बी, दिस इज e raised to, it is j into e raised to j n omega t minus e raised to minus j n omega t divided by ओनली 2। j को हमने ऊपर ले लिया एंड वी हैव रिटन माइनस, इट्स माइनस j। ओके, अभी ये जो आइडेंटिटी है cos n ओमेगा t और sin ओमेगा t, इसको कहाँ पे पुट करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है दिस वन, हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पर प्लेस दिस हियर, प्लेस दिस हियर। Okay, so this equation will become, this trigonometric form will change, so it will become, it is x of t, we have same periodic signal, it's a different form, so here it is a0 plus summation an, okay, I'll use different color, it is e raised to jn omega t plus e raised to minus jn omega t divided by 2 plus, okay, it is, so not dt, okay, plus bn into sin n omega t के प्लेस में हमें क्या लिखना है? इट्स माइनस j e raised to, okay, so it's a double bracket here, so we'll use this double bracket because we have j inside, so it is minus j, therefore it is e raised to jn omega t minus e raised to minus jn omega t divided by 2, so double bracket close. So we'll simplify this, what we'll get, देखिए, so it is, we'll take a0 equal to c0, okay, take a0 equal to c0, a0 equal to c0, we'll prove this, why we are taking a0 equal to c0, we'll understand this when we'll take, okay, n equal to 0, we'll get c0 in this equation. So x of t, ये हमारा इक्वेशन बन गया c0 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो इट विल बिकम, सो summation limit I forgot, 1 to infinity, so it is 1 to infinity an, so it is an jn omega t, an e raised to jn omega t, okay, an divided by 2 plus an e raised to minus jn omega t divided by 2, we got these two components. Next term जो है, we'll keep it in, okay, we'll remove the bracket, so it is minus bn, it is j e raised to jn omega t, okay, divided by 2, it is divided by 2, so it is minus minus plus, it is j bn e raised to minus jn omega t divided by 2. Now collect जो similar terms है, which are similar terms we have, देखिए, this is plus and this is plus, this is minus and this is minus, collect this together, take common, तो हमें क्या मिलेगा? We'll get c0, this is equal to c0 sum or 1 to infinity, okay, we'll get an minus jbn, so it is an minus jbn divided by
2. फाइन. व्हाट इज दिस? इसके साथ क्या है? jn ओमेगा टी है प्लस jn ओमेगा टी है. एक टर्म मिला, सेकंड टर्म प्लस दिस वन, ओके, माइनस. तो an ब्रैकेट में क्या है? an, ओके, प्लस प्लस jbn. ओके, इसका जो साइन है प्लस jbn, सो इट इज प्लस jbn डिवाइड बाय 2 e रेस टू माइनस jn ओमेगा टी है. तो हमारे पास दो टर्म है. ओके, लेट अस टेक दिस टर्म. ये जो टर्म है विल टेक दिस इक्वल टू this term equal to, will take Cn. Let us take Cn, and this term equal to C minus n. Okay, it represent the minus complex term e raised to minus jn omega t. Okay, both are opposite each other. One is right side, other is left side. Okay, therefore this equation simplifies to, so this will simplify to x of t. क्या होगा? x of t c0 प्लस सम और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cn e रेस टू jn ओमेगा टी प्लस c माइनस n e रेस टू माइनस jn ओमेगा टी. इसको हम समेशन को सेपरेट कर देंगे. इट इज अ प्लस साइन. ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? c0 प्लस सम, ओके, दिस इज सिंगल टर्म 1 टू इन्फिनिटी cn e रेस टू प्लस jn ओमेगा टी प्लस हम इसको इसके साथ सेपरेट सम लेंगे. n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी c माइनस n e रेस टू माइनस jn ओमेगा टी. ओके, अभी क्या करेंगे? ये जो टर्म है, दिस टर्म विल चेंज दिस टर्म. n इक्वल टू माइनस m पुट किया हमने. ओके, इन दिस टर्म put n equal to minus m. So what is m? Okay, so it is n equal to minus m. put किया तो क्या हो जाएगा? It will be minus 1. So m equal to minus 1 to a minus infinity हो जाएगा. Okay, so this will be, so m equal to minus 1 to minus infinity बन जाएगा this term, and this term will become positive. So this term will be plus jm omega t बन जाएगा, plus jm. Okay, so I am writing here. So this will be equal to c0 plus sum of 1 to infinity. This is as it is, e raised to plus jn omega t. Okay, plus this term will be like this. So it is, I am highlighting this using this color. So it is m equal to minus 1 to minus infinity. Because of this substitution it become minus. So it is c minus n e raised to plus jm omega t. ओके, ये टर्म हो गया. अभी होगा क्या इससे? ये जो टर्म है, दिस इज द राइट साइड 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज लेफ्ट साइड माइनस 1 टू माइनस इन्फिनिटी, और बीच में क्या है? 0. When n equal to 0, what we'll get? We'll get c0. Means if you substitute here n equal to 0, you will get constant term. Fine, only coefficient n की वैल्यू 0 अगर पुट की हमने तो. So in general we can write this, in general we can write this as x of t is equal to sum over n equal to minus infinity. So n equal to minus infinity to plus infinity. Okay, so it's cn e raised to jn omega t. Okay, in general we can write this. When n equal to 0 put करेंगे हम, so what we'll get? c0 and e raised to 0. E raised to 0 is 1. So what is the term? What will be the summation? Summation will be 0. Okay, so x of t is equal to, so it is c0 e raised to 0.
So what is the x of t? Will get c0 only. So x of t is constant term for n equal to 0 value. Therefore ये जो इक्वेशन लिखा है समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें c0 के वैल्यू कवर होता है, इसीलिए नो नीड टू राइट सेपरेट. ओके, एंड इफ आर राइटिंग दिस देन अगेन यू हैव टू मेंशन n इक्वल टू 1 to infinity n minus 1 to minus infinity. Okay, so it's a combined term and this is the exponential Fourier series. हमने सेम इक्वेशन को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था उसको चेंज करके उसको सब्स्टिट्यूट करके हमें इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? वी कैन प्लॉट द स्पेक्ट्रम यूजिंग दिस एक्सपोनेंशियल सीरीज. ओके, this Fourier series is called Exponential Fourier Series or it is called Complex Fourier Series, complex representation of Fourier series. Why? Because j term is available here. ये जो j है it is a complex number, it represents that it is a complex exponential. Okay, and what we have, हमें क्या मिला इससे? हमें मिला Cn. How to find Cn? Okay, so we can write this as ये जो है exponential Fourier series को हम ऐसा लिख सकते हैं, exponential Fourier series from trigonometric Fourier series. If you know trigonometric Fourier series, you can find exponential Fourier series. वो कैसे? C0 is equal to A0. If A0 known, you can directly take as a C0 equal to A0. And Cn, what is the Cn? In equation, okay, we have taken an plus bn, okay, is equal to ये जो value है, see here, this one, an minus jbn by 2 is equal to cn, or an plus jbn is equal to c minus n. Okay, I will tell you what is c minus n indicates. So it is an minus jbn divided by 2, it's cn. From an and bn we can obtain the cn, and c minus n जो है, c minus n जो है an plus jbn divided by 2. Okay, we can find out the exponential Fourier series, complete Fourier series. Now ये equation में cn भी है और c minus n भी है. Why it is like this? Only एक ही फाइंड करना चाहिए, बट यहाँ पर तो दो वैल्यूज है. वो क्यों है? बिकॉज दे आर कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. मतलब अगर हमें Cn का वैल्यू पता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं C माइनस n कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब एक राइट साइड में है, दूसरा क्या है, लेफ्ट साइड में. ओके, तो इसके रियल वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. व्हेन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Cn, because it is a complex quantity, okay, and complex quantity has two things. जैसे कि ये है complex quantity, कैसे हम डिनोट करते हैं? So z इक्वल टू, ओके, r प्लस आई वाई, ओके, या फिर ऐसे बोलो x प्लस I into y. So what is this I? So this denote the imaginary part. So this is imaginary part, and this one is real part. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें प्लॉट करना है लाइन पे, कोई भी लाइन है, सपोज दिस वन x and y. So this is not x and y here. This is what? This is real part
and this is imaginary part. So this is what? This is called complex plane. ये जो है ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हमें ज़रूरत है कॉम्प्लेक्स प्लेन की, जिस पर हम रियल पार्ट को प्लॉट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पर लोकेट कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट जे एंड दिस इज व्हाट, यहाँ पर आई है बट वी हैव जे. ओके, आई एंड दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड and real part of z. okay, so what we have, हमारे पास जो है, हमारे पास है this one cn और bn है. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, we can write this as, this is equal to an divided by 2 minus j bn divided by 2 and this is equal to an divided by 2 plus j into bn divided by 2. So what is this? ये जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है ए एन और बी एन के साथ जो है जे के साथ जो भी है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. ओके, सो वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें. मैग्नीट्यूड, व्हाई वी नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड? बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. ओके, तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए हमें मैग्नीट्यूड लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन. ओके, एंड हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन? सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन इज इक्वल टू, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. जब हम ऐसा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा. व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? जो जे के साथ कोएफिशिएंट प्रेजेंट है हमें उसको यहाँ पे पुट करना है, देन विल गेट द मैग्नीट्यूड. एंड व्हाट इज द रियल पार्ट? वी हैव, हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है ए एन बाई 2 स्क्वायर प्लस माइनस बी एन बाई 2 स्क्वायर. हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर वो है माइनस बी एन. ओके, जे के साथ क्या है? माइनस बी एन है, यहाँ पर प्लस बी एन है, तो हम वी आर टेकिंग माइनस बी एन, सो विल गेट प्लस, स्क्वायर करके हमें प्लस ही मिलेगा. सो इट इज, सो दिस वन इज ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर डिवाइड बाय 4. सो इट विल बी 1 by 2 ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. ये हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन. ओके, मैग्नीट्यूड है मतलब क्या है? इट इज़ फॉर प्लस एंड माइनस वैल्यूज. अगर प्लस वैल्यू है तो राइट साइड में जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, बिकॉज इट कवर्स द नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज. इसमें जो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन लिए है हमने, तो वो डिनोट करता है कि negative frequencies, okay, which will be left side of 0. okay, it is for analysis purpose. हम रियल में कौन सा सिग्नल यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए? रियल टाइम पीरियडिक सिग्नल. एक्स ऑफ टी जो है हमारा वो है रियल टाइम पीरियडिक. उसमें कोई नेगेटिव ऑसिलेशंस हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल. बट फॉर द एनालिसिस पर्पज वी यूज द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज इन फोरियर सीरीज एज वेल एज इन फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑल्सो. ओके, विल सी एट द टाइम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड आया. अभी जो इसका फेज है तो इससे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मिलेगा. व्हाट इज मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम? ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का एक स्पेक्ट्रम है. मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम, ये दोनों मिला के, दोनों का कॉम्बिनेशन, इट इज कॉल्ड एज अ frequency spectrum of Fourier series. okay, so it is magnitude spectrum जो है, so it is mod of Cn versus omega. okay, what is omega? Omega is the fundamental frequency, angular frequency which is represented using in radians. okay, so हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा representation of
this. It is omega and it is minus omega, और ये जो है ये है हमारा mod of Cn. ओके, सो C0 व्हेन n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 है, सो क्या मिलेगा हमें? C0 वैल्यू मिलेगा. x ऑफ टी इज इक्वल टू जो हमारा एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का इक्वेशन है, हमने n इक्वल टू पुट किया तो हमें क्या मिला? C0 मिला. इट्स अ DC कंपोनेंट, सो नो फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी इज 0, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, suppose this is the height of this one, so this one is what? C0. It's a DC value present, so it's omega is equal to 1, so it is 1 omega, 2 omega, 3 omega. ओके, और ये जो है हमारे पास Cn इक्वल टू C माइनस n, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. अगर हमें एक वैल्यू ऑब्टेन होता है तो हम दूसरा वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसे ले सकते हैं, बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. ओके, अगर हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलता है तो सो वी कैन टेक दिस 1 ओमेगा सेम वैल्यू. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ओके, सो हमें देखिए, सो दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज 2 ओमेगा एंड दिस इज 3 ओमेगा. So it from this it is clear that ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ Cn, ओके, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Cn? जो मैग्नीट्यूड ऑफ Cn है, Cn, मैग्नीट्यूड ऑफ Cn जो है डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग with increasing omega. मतलब for n equal to 1, okay, for omega 2 omega 3 omega 4 omega and so on, this is the increasing harmonic, increasing frequency of harmonic. ओके, हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन में वो क्या होगा? कम होगा. ओके, नाउ फेज, वी हैव टू फाइंड फेज ऑफ दिस फेज स्पेक्ट्रम. वी हैव टू फाइंड फेज स्पेक्ट्रम. वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ Cn. हमें एंगल ऑफ Cn फाइंड करना है. सो एंगल ऑफ Cn is equal to minus, it is tan inverse of, it is tan inverse of imaginary part, tan inverse of imaginary part divided by real part. हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वो है bn, so minus bn by 2. रियल पार्ट क्या है? an divided by 2. So we will substitute here. So it is tan inverse of minus bn divided by 2 divided by an divided by 2. So this 2 will get cancelled. Okay. So what is remaining is tan inverse of bn minus bn divided by an. Okay. And we know that tan inverse of minus theta equal to tan inverse of theta. Okay, this is the relation. So what we'll get is a minus tan inverse of theta. So it is angle of Cn जो है हमारा वैल्यू आएगा minus tan inverse of bn divided by an. So we can find the phase of harmonics present in the Fourier series representation. हमारे पास जो है नंबर ऑफ साइनोसॉइडल कंपोनेंट जो है उसमें इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट. रियल पार्ट, विच वन इज रियल पार्ट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म? कोसाइनोसॉइडल. और इमेजिनरी कौन सा पार्ट है? साइनोसॉइडल पार्ट है. ओके, एंड ईच हार्मोनिक हैज different height. Height is denoted using magnitude, and the phase, okay, the phase of these real and imaginary part is given by
angle of Cn equal to minus tan inverse of Bn divided by An. We can find this and we can have plot of this. ये जो plot है, so it is the जो plot है, so omega versus angle of Cn. ओके, तो इससे ये जो एंगल है वो है एंटीसिमेट्रिक. ओके, ये एंगल ऑफ Cn जो है इज इक्वल टू माइनस एंगल ऑफ C minus n. Okay, so it's antisymmetric. If you are getting values like this, if you are getting values like this side, so it is for omega, so 2 omega and 3 omega. Okay, if it is pi by 2, if it is pi by 2, we are not calculated any example, just I am taking this figure as an example. Okay, अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, दैट आई एम शोइंग यू दिस वन. ओके, सो माइनस, so it is minus omega minus 2 omega, it's a minus pi by 2. Okay, so this denote the antisymmetric relation between angle of Cn. ये है exponential Fourier series. We can obtain one Fourier series from other. Okay, हम ये next lecture में हम डिस्कस करेंगे कि how to solve examples and how to obtain exponential Fourier series from trigonometric Fourier series and trigonometric Fourier series from exponential given values.